So again, very good evening, my dear listeners and well-wishers. I am Wasi sir, faculty for English. As you know, I am giving the class on the homophonic words that are very confusing many times among the students as well as the listeners. So, in that series, I am going to deliver the lectures on some of the very important, practical and confusing homophonic words. So, in the list, I am going to start the first word, which is idle, idle and idle. So, you may have the confusion what Wasi sir is speaking. So the first two word which has the spelling idle, I-D-L-E, and the second word is I-D-E-A-L, and the third word is I-D-O-L. So the first word, that is the spelling I-D-L-E, that means the person who is very lazy, who is very languorous, languid, आलसी किस्म के बंदे. So idle is having the four letters I-D-L-E, I for idle, and D stands for dormant, D-O-R-M-A-N-T. So what is the meaning of dormant? When something is inactive completely. Suppose in your bank account, if the credit and debit is not going on for many years or more than 1 year, so your account will be kept in dormant account. So don't worry, एक बार आप अपना KYC जमा करेंगे, then that will be active again. So that is dormant, D-O-R-M-A-N-T. And L stands for languorous, languid, lethargic. These all are giving the same word, the same meaning, that is lazy. And E for easeful. So that is idle, I-D-L-E, that means lazy. यानी वो लोग जो आलसी किस्म के होते हैं, सुस्त किस्म के होते हैं, they take the action very late or lately, so they will be called the idle, I-D-L-E. Moving to the next word, that is ideal, I-D-E-A-L. इसका मतलब होता है आदर्श, मीन्स परफेक्ट, मीन्स द परफेक्ट एग्जाम्पल, द कंप्लीट पर्सन और द एब्सोल्यूट पर्सन. बहुत सारे लोग एक दूसरे को अपना आइडल बनाते हैं. वाई? बिकॉज दैट पर्सन इज द कंप्लीट. मे बी द लेडी और जेंट्स, you make the idol in your life, so that will be the complete examples, and you want to follow every steps of his life or her life in your life. So that's why you call them the idol, I-D-E-A-L, that is perfect. And the last word is I-D-O-L, that means statue, you know, icon, I-C-O-N, icon, like Indian Idol. So what was Indian Idol? That was the icon, statue. Right now? So these three words they were the very confusing, but after listening this lecture, watching my video, you will be very confident. Now moving to the next word, which is advice, A-D-V-I-C-E, and next word is A-D-V-I-S-E. Many times the students are very confused. What is advice? A-D-V-I-C-E, that is noun, and A-D-V-I-S-E, that is verb. So the word A-D-V-I-C-E, that means counseling, that means guidance. And when it is the verb, so then you can say to counsel, okay, to guide. That is advice, A-D-V-I-S-E. So पहला जो एडवाइस है A-D-V-I-C-E, वो नाउन है, और दूसरा जो एडवाइस है A-D-V-I-S-E, वो एक वर्ब है. तो अगर काउंसलिंग कह देंगे एक नाउन हो जाएगा, लेकिन टू काउंसिल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. उसी तरह से अगर गाइडेंस कह देंगे
तो वो नाउन हो जाएगा, लेकिन टू गाइड कहेंगे सो दैट विल बी द वर्ब. सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन advice and advice. Moving to the next word, affect and affect. One starts with A-double-F-E-C-T, and second starts with E-double-F-E-C-T. So A, that starts with A, that is a verb, and the word that starts with E, effect, that is noun. Okay, so affect, A-double-F-E-C-T, influence, impact. What is the impact? What is the influence? And the next word, effect, that means what is the consequence, what is the result, what is the sequel, what is the aftermath. यानी पहले इफेक्ट का मतलब होता है A-double-F-E-C-T, इस अफेक्ट का मतलब होता है कि इसका क्या असर है, इसका क्या प्रभाव है, इसका क्या इन्फ्लुएंस है, किसी के कैरेक्टर का कैसे उसने अफेक्ट किया. जैसे, और दूसरा जो है इफेक्ट, E-double-F-E-C-T एक नाउन है जिसे कहा जाता है कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, आउटकम, जो भी आप कहें. तो कहेंगे कि आपका अफेक्ट हमारे कैरेक्टर पर है, हमारे लाइफ पर है. तो योर अफेक्ट में आप बोलेंगे कौन सी स्पेलिंग होगी, E-double-F-E-C-T, क्योंकि पॉसेसिव वर्ड के बाद जो भी हमारे डिटर्मिनेंट्स है, अगर आप स्टूडेंट्स तो आप जान रहे होंगे जो डिटर्मिनेंट्स है, जैसे यू, योर एक डिटर्मिनेंट्स है, पॉसेसिव डिटर्मिनेंट्स है, माई पॉसेसिव डिटर्मिनेंट्स है, इनके बाद हमेशा नाउन आता है. तो कौन सा वर्ड ढूंढेंगे, E-double-F-E-C-T. द है तो द, अगर इफेक्ट आएगा तो द अफेक्ट के साथ E-double-F-E-C-T ही होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल के बाद भी नाउन ही आता है. लेकिन अगर कह दिया जाए कि दिस मेडिसिन हैज़ अफेक्टेड माई हेल्थ, तो वो कौन सा वर्ड होना चाहिए, A-double-F-E-C-T-E-D, दैट विल बी अफेक्टेड, दैट विल स्टार्ट विथ A. सो वन इज द अफेक्ट, A-double-F-E-C-T, and second is affect, E-double-F-E-C-T. Moving to the next word, that is difference, D-E-F-E-R-E-N-C-E, and second one is the D-I-F-F-E-R-E-N-C-E. So the second word D-I-F-F-E-R-E-N-C-E, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में पार्टीशन करना, अंतर करना, राइट ना, दैट इज डिफरेंस. डिस्टिंक्शन करना या डिस्पैरिटी करना, वो डिफरेंस होता है. D-I-F-F-E-R-E-N-C, उसका मतलब अंतर होता है, मतभेद होता है, मीन्स व्हेन देयर इज द डिसएग्रीमेंट, सो दैट विल बी द डिफरेंस. व्यूज में बी डिफरेंट, तो वो डिफरेंस हो जाएगा, जिसको डिफरेंट और डिफरेंस के संज्ञान में करेंगे तो डिफरेंट एडजेक्टिव हो जाएगा, डिफरेंस नाउन हो जाएगा. लेकिन एक दूसरा वर्ड जो डिफरेंस है, D-E-F-E-R-E-N-C-E, अगेन सुनिए, D-E-F-E-R-E-N-C-E, इस डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ऑनर, किसी की इज्जत करना, किसी का सम्मान करना, वो डिफरेंस होता है. D-E-F-E-R-E-N-C-E, जिसे रिस्पेक्ट कहेंगे, ऑनर कहेंगे, रिगार्ड कहेंगे, रिवरेंस कहेंगे. अब एक और बात मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो, रिस्पेक्ट जो होता है ना, वो कॉमन पर्सन का होता है. कॉमन पर्सन मीन्स जो आपके साथ रहते हैं, आपके एल्डर्स, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स, वॉट एवर, योर टीचर्स, हू एवर इज देयर. बट द पर्सन हु इज गॉड लाइक, तो जो गॉड लाइक हो जाएगा और सेमी गॉड हो जाएगा, उनका रिवरेंस होता है, R-E-V-E-R-E-N-C-E. जब गॉड का हम रिवरेंस, तो गॉड का रिस्पेक्ट नहीं करते, गॉड का हम रिवरेंस करते हैं. जैसा गौतम बुद्ध हो गया, महात्मा बुद्ध हो गया, तो उनका हम रिवरेंस करेंगे. भगवान राम है तो उनका हम रिवरेंस करेंगे. माँ दुर्गा है, उनका हम रिवरेंस करेंगे. मोहम्मद साहब है, उनका हम रिवरेंस करेंगे. उनका हम रिस्पेक्ट नहीं, उनका रिवरेंस. ये इज्जत से ज़्यादा, सम्मान से ज़्यादा उठ करके जब दिया जाता है तो वो रिवरेंस हो जाता है, R-E-V-E-R-E-N-C-E. So in this lecture, in this video, you have seen so many confusing words. So keep on watching if you want to get more knowledge on the homophonic words. So my videos will regularly be continued. So for that, if you are really interested, keep on watching my video and don't forget of my channel, that is KT Campus by Wasi sir. KT K
NT KT campus by Wasi sir. So you can download my channel, you can subscribe my channel, then it will be very easy for you to watch on my videos and listen very carefully every video. That will be very fruitful to all the students as well as the common person. Till then, say thank you so much. Good night.